Hello students, I am Monica Soral from ME International School, Nayagaon. Today we will be learning the 4th chapter from the book First Flight from the Diary of Anne Frank. From the Diary of Anne Frank. Now what is this story about? First let us read about Anne Frank, a little bit about her. Anneliese Maria Anne Frank, 12 June 1929 February March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with a family and for friends in Amsterdam during German occupation of Netherlands in World War II. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power to Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. Now what had happened? See, this Anne Frank had written a diary. ये डायरी उसने कब लिखी थी? जब नाजीज ने अटैक किया था और ये लोग हाइड आउट में थे, ये लोग छुपे हुए थे बचने के लिए, वहाँ पर छुप के बैठे थे, वहाँ पर इसने बैठ के एक डायरी लिखी थी. एंड फ्रॉम दैट ओनली द एक्सट्रैक्ट इज बीन गिवन इन दिस स्टोरी. Now, after 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Now what had happened? See, over there when they were in the camp, now these were in concentration camp. वहाँ पर ये पहले ही नाजी लोग से हिटलर का जो मूवमेंट था उससे वो लोग डरे हुए थे और वो लोग छुपे हुए थे, हाइड आउट में थे, मतलब छुपे हुए थे. एंड देयर एन हैड डाइड, एन को बीमारी हो गई और वो वहाँ पर उनकी डेथ हो गई, उसकी सिस्टर की भी डेथ हो गई. उस ग्रुप में, उस हाइड आउट में ओनली द सर्वाइवल वॉज एन्स फादर. उनके फादर बच गए थे उसमें और उनके पास ये डायरी मिली थी. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. Now what a father did, उनको वो डायरी बहुत प्रेशियस लगी. उन्होंने क्या सोचा कि मैं इस डायरी को पब्लिश करवाऊँगा, ये मेरी डॉटर ने लिखी हुई डायरी है when they were in the hideout. So he published it. The name was The Diary of a Young Girl. The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. देखो ये बहुत सारी पहले ओरिजिनल लैंग्वेज तो उसकी डच थी बट इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके और इसको डिस्ट्रीब्यूट करा गया था और वो बहुत ज़्यादा हिट बुक बन गई. एवरीवन वाज इंटरेस्टेड टू रीड दैट बुक. Now described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank became one of the most renowned and discussed of the Holocaust victim. अब उस टाइम पे जो हिटलर के अंडर में जो विक्टिम्स थे उसमें एन फ्रैंक सबसे बड़ी जो विक्टिम थी जिसने सारी बातें उस टाइम की व्हेन दे वर इन द हाइड आउट, उसने इस डायरी में उसने एक्सप्लेन करी हुई है. सो शी बिकेम द मोस्ट डिस्कस्ड विक्टिम. Now when you are in under some pressure, एक डर में आप हो और उस टाइम पे आपको लिखना, that is a big deal actually. So that's what she did. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. Now उसने क्या सोचा कि एक 13-year-old girl, उसको कभी उसने लिखा ही नहीं था और उसने डायरी लिखने की सोची, तो ये बहुत बड़ी बात थी उसके लिए ये सोचना है कि मुझे डायरी लिखनी है. और उसने क्या सोचा, अगर मैं ये नहीं लिखूंगी तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ था और हम किस सिचुएशन में हम यहाँ पर हाइड आउट में फंसे हुए थे या क्या कर रहे थे. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स.
bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have many more patience, and since I am not planning to get anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as diary. Unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Now this is a very true thing she said कि पेपर में पेशेंस होता है ना. अब हम अगर किसी से बात करते हैं, हम किसी से कुछ चीज़ शेयर करते हैं तो वो लीक आउट भी हो सकती है, बट हमारी कोई फीलिंग्स ऐसी होती है जो हम हर किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते, तो हम उसको डायरी में उतार देते हैं. और डायरी आपकी बात सुनती है पेशेंटली, आपको वो बार बार रोकेगी नहीं, आपको कुछ मना नहीं करेगी कि ये मत बोलो या कुछ भी ऐसे, तो वो डायरी आपकी बात को पेशेंटली सुनेगी. So she thought that way. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything for ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. अब देखो उसके डायरी कब लिखता है इंसान, जब उसको ऐसा लगता है कि मैं अलोन हूँ, नो वन इज़ लिसनिंग टू मी, नो वन इज़ टॉकिंग टू मी. इसके साथ ऐसा केस नहीं था, उसकी सिस्टर थी, उसके लविंग पेरेंट्स थे, एवरीवन 30 पीपल जो फ्रेंड्स थे उसके वो थे. बट वॉट शी फेल्ट दैट हर चीज़ एवरीथिंग यू कांट शेयर विद अ पर्सन. अब वो फ्रेंड्स के साथ मिलती थी तो वो अलग टॉक्स होते थे, अलग चीज़ों में एन्जॉयमेंट होता था, बट द थिंग वॉट वॉज कमिंग इन हर माइंड दैट शी वॉज नॉट एबल टू डिस्कस विद अ फ्रेंड्स. इसीलिए उसे एक जो बेस्ट फ्रेंड के लिए चुना, उसने डायरी को चुना. So to enhance the image of this long waiting friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. अब देखो उसने उस डायरी का नाम भी रख दिया था. उसने डायरी को क्या नाम दिया? किटी. तो उसने क्या सोचा कि मैं इससे एज अ फ्रेंड बात करूँगी, मैं उसको कोई फैक्ट्स वगैरह कुछ लिखने वाली नहीं हूँ, ओनली आई एम गोइंग टू टॉक टू माई डायरी एज अ फ्रेंड. See, since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. Now what she said, that अगर मैं किटी से बात करती हूँ, डायरी से बात करती हूँ और मैं अपने बारे में कुछ भी लिखूँगी तो people will not understand ना what I've written, so I will just give a brief sketch of mine. उसने बोला मैं अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊँगी, जो वो नहीं चाह रही थी बताना, but yet she said, my father, the most adorable father I've ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 35. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December and I followed in February, when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. Now all this she has written about herself. उसकी sister कब born हुई, उसके father के बारे में, उसकी mother के बारे में, everything she has given in the detail over here, and the months when they were born. I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Kupras, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. Now she had written about right from her studies in the school, right from the Montessori, right from the nursery class to the end, when she was out of the school, and how the teachers started crying
to be departed. Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. Now this is all she wrote in brief about herself in the diary before starting to talk to the diary. Now she told about her grandmother. She used to love her grandmother, and she had died in the month of January. All the details she has written over there. Now next, what she talks to the diary, we'll see. Yes, now she is writing the diary. See, dearest Kitty. Kitty, I told you that she had kept the name of the diary. Our entire class is quacking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jax, who have staked their entire holiday savings on their bets. From morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on the earth. See, now what she tells the diary, she is telling about the school. स्कूल में बैट चल रही थी कि कौन बच्चा वो डिसाइड होने वाला था आज के रिजल्ट, यानी कि उनका रिजल्ट आने वाला था, तो कौन फेल हो गया और कौन पास हो गया ये डिसाइड होने वाला था. तो वो लोग बैट कर रहे थे कि ये स्टूडेंट पीछे रह जाएगा और ये स्टूडेंट पास हो जाएगा. तो इस बारे में उनकी आर्ग्यूमेंट चल रहा था. सो हियर दे वर अगेन एंड व्हाट दे सेड दैट हमारे तरह स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बच्चा फेल होगा ये पास होगा, दे वर डिसाइडिंग, बट शी सेड दैट टीचर्स आर अनप्रेडिक्टेबल टीचर्स. मतलब टीचर्स किसको फेल करें किसको पास करें कुछ कह नहीं सकते. दैट शी टोल्ड द डायरी. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. वील मेक इट. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट. अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट. नाउ उनको सबसे ज़्यादा चिंता क्या थी, उन्होंने बोला कि मेरी जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरी गर्ल फ्रेंड्स हैं, वो तो उनमें से तो कोई फेल नहीं होगा, बट सिर्फ डर किस में लग रहा था उनको, मैथ्स में. और वो उनको क्या लग रहा था कि अब वेट करते हैं देखते हैं क्या रिजल्ट आया. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Kissing, the old Fauji who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talk too much. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox, what can you write about that? I'd worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. Now see, मैथ्स से वो क्यों टीचर घबरा रही थी, क्योंकि जो सर थे मैथ्स वाले वो उससे हमेशा गुस्सा होते थे क्योंकि वो बहुत बोलती थी. उन्होंने उस बोलने की वजह से उसका नाम क्या रख दिया था, चैटरबॉक्स. चैटरबॉक्स मतलब पूरे टाइम बक 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 करते, मतलब चुप ही नहीं रहती है. तो मतलब क्लास में तुम चुप नहीं रह सकती क्या, एवरी टाइम यूज टू शाउट. तो इसलिए वो मैथ से भी डर रही थी कि सर कहीं मुझे फेल नहीं कर दे, क्योंकि ये मेरे से चिढ़ते थे कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी. उन्होंने उसको क्या बोला कि तुम चैटरबॉक्स के ऊपर एक ऐसे लिख सकती हो, इतना तुम बोलती हो, ऐसे करके उन्होंने उसको बोला. अब उसने क्या करा, एन फ्रैंक ने, उसने वो चैटरबॉक्स वर्ड लिख के अपने पेज लेके अपने पॉकेट में डाल दिया कि देखते हैं मैं इसके बारे में कुछ लिखूंगी. नाउ दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone would ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Kissings had assigned me and was satisfied. I argued that talking is the student's trait and that I would do my best to keep it under control. Now see, होमवर्क करने के बाद एन फ्रैंक ने क्या सोचा कि अब जो सर ने मुझे असाइनमेंट दिया है ना ऐसे लिखने चैटर बॉक्स पे, तो मैं लिखूंगी. और वो बोली कि मैं ये लिखूंगी कि स्टूडेंट का तो राइट है बोलने का, स्टूडेंट नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा. तो बोले कि क्यों बात करनी चाहिए और क्या इंपॉर्टेंस है टॉकिंग का, वो मैं इनको लिख के बताऊंगी. तो उसने एन फ्रैंक ने 3 पेजेस लिख दिए चैटर बॉक्स के ऊपर, ऐसे लिखने दिया तो उन्होंने 3 पेजेस उस पर लिख दिए. नाउ लेट्स सी व्हाट शी हैज़ रिटन अबाउट. यस,
but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. अब उसने क्या बोला, ये जो बात करने की आदत उसने किस पे डाल दी, अपनी मदर पे। बोली मेरी मदर भी बहुत बात करती है तो मेरी भी आदत उनकी जैसी हो गई, मैं भी बात बहुत करती हूँ, तो अब मैं इसमें मेरी गलती कहाँ है, मैंने अपनी मदर का हैबिट को इनहेरिट किया हुआ है, उसने बोला। मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, बट व्हेन आई proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. I handed it in and Mr. Casing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he'd finally had enough. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack, 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 said Mistress Chatterbox. Now see what he did. अब उन्होंने इसमें वो आर्ग्यूमेंट रख दिया ना कि मेरी मम्मी भी बोलती तो मैं भी बोलती हूँ, तो सर ने क्या सोचा कि ये तो कुछ नहीं सुनने वाली, तो उन्होंने एक और उसको ऐसे दिया एज अ पनिशमेंट, और वो उसको सेकेंड ऐसे उन्होंने बोला इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स के ऊपर लिखो। फिर उसने क्या बोला कि उस ऐसे का जो टाइटल होगा वो कैसे होगा, उसमें लिखोगे क्वैक 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 क्वैक, तो सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स उसको नाम रख दिया। सी ओवर हियर हाउ सर इज टॉकिंग टू Anne Frank. The class roared. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. My friend Sain, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to the end in verse and jumped for joy. Mr. Casing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him. नाउ सी, अब सारी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगी क्योंकि उनको पता चल गया कि ये सर इसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसको चिढ़ा रहे हैं, तो उसको भी बहुत बुरा लग रहा था एन फ्रैंक को। उसने वो हंसी तो सही, पर उसने क्या सोचा कि मैं ऐसे लिखूंगी अब कि उनका मजाक बन के रह जाए टीचर का, ना कि मेरा। उसने क्या, फिर उसकी एक फ्रेंड थी हु यूज्ड टू राइट द पोएट्री, उसने बोला आई विल हेल्प यू एंड राइट द ऐसे, कंप्लीट द ऐसे अबाउट इट। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. नाउ सी what she wrote. उसने पोएम लिखी और उस पोएम में उसने क्या दिया, एक के मदर थी डक और स्वान, और उन्होंने अपने जो छोटे छोटे डकलिंग से उनको सिर्फ इसलिए उसके फादर ने काट के मार डाला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, मतलब बोलते थे, आवाज़ करते थे, तो फादर ने उनको खा दिया। तो वो अब उनके जो सर थे उन्होंने उसको थोड़ा सा राइट वे में ले लिया, उन्होंने उसको बुरा नहीं माना, बट ही थॉट समथिंग दैट ये लड़की कुछ बताना चाह रही है। नेक्स्ट, now the poem, how it read, poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing's always making jokes these days. See, this was the thing. अब वो जो पोएम पढ़ने के बाद सर को भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, उनको लगा कि मैंने ये गलत कर दिया, छोटे बच्चों का मुंह अपन कैसे बंद कर सकते हैं, वो बेचारे कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ अपने आप वो लोग बात करना चाहते हैं, हर एक को अपन ऐसे चुप करके तो नहीं बैठा सकते, दे आर जस्ट स्मॉल चिल्ड्रन। सो ही फेल्ट बैड एंड नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग जोक्स ऑन एन फ्रैंक। उन्होंने उसके ऊपर जोक्स करना बंद कर दिया और उन्होंने लास्ट में फिर क्लास में भी वो जोक्स बोलते रहते थे और बच्चों के साथ खुद भी बातें करते थे और उनको हंसाते थे। थैंक यू।